signs of stabilization. Inflation has come down. Growth is slowly picking up. But underneath this improvement, some long-standing structural challenges remain. One of the most serious among them is our persistently low domestic saving rate. According to the latest Pakistan's economic survey, our domestic saving rate stands at 7.4% only as a percentage of GDP. This is significantly lower when compared to an average domestic saving rate of 27% in South Asia and 41% in East Asian economies. This low saving rate creates a large gap between what we save and what we need to invest. And this is why we have had to rely heavily on foreign inflows to meet our development needs. But this reliance has come at a cost. Among other factors, it has contributed to repeated balance of payments stresses, instability in FX markets, and inflationary pressures. Over time, these recurring problems have weakened our growth momentum. In earlier decades, we saw economic growth of above 6%. In the past 2 decades, the average growth has been closer to 4%. Avoiding the boom-bust cycle requires us to mobilize more domestic savings and channel them into productive investments. This is where well-developed, deep, and diversified capital markets working alongside the banking system can make a difference. Ladies and gentlemen, with this background, let me now share my views and thoughts on the current state of capital markets in Pakistan and how their deepening can benefit our banks. Over the past 2 decades, Pakistan's government bond market has developed from offering only basic fixed coupon instruments to a broad range of securities, including fixed rate, floating rate, and Sharia-compliant options of various maturities. This evolution has created a reasonably deep and liquid sovereign yield curve, supported by regular auctions and active secondary market trading. However, the government bond market remains heavily concentrated within the banking system. Recently, the SBP has taken further targeted steps to broaden access and deepen the country's bond market. The primary dealer system has been revamped to include non-bank institutions such as the National Clearing Company Limited and the Central Depository Company as CDC as a special purpose primary dealer, enabling them to bid directly in the auctions on behalf of the clients. The scope of investor portfolio securities accounts has also been expanded to microfinance banks, CDC, and NCCPL. This provides close to 100 million branchless banking and mobile banking users in the country the opportunity to invest in government securities. Account opening has already been simplified through the customer's digital onboarding framework. Together, these reforms aim to diversify the investor base, enhance liquidity, and make the sovereign segment more resilient. At the same time, these reforms are helping in laying the groundwork for broader capital market development. In particular, a deep and inclusive government bond market can serve as the benchmark for pricing other forms of debt, including corporate bonds. However, while the country's government bond market has been steadily progressing, the corporate debt market remains largely absent. Outstanding corporate bonds amount to less than 1% of our GDP, substantially lower than Asian countries. Also,
most of these bonds are privately placed with minimal secondary market activity. Non-financial firms as well as sectors such as manufacturing, infrastructure, and renewable energy, which could benefit greatly from long-term funding, remain almost entirely dependent on bank loans. The lack of vibrant capital debt market restricts businesses from accessing long-term financing on competitive rates, which also limit सहाफ़ी ख़वातीन व हज़रात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप CM हाउस में तशरीफ़ लाए और आज जो मैंने आपके साथ ब्रीफ़ करना है आपको, सुबह के अखबारात में आप लोगों ने अच्छी जर्नलिज़म की और उसमें बहुत हद तक वो ख़बर मौजूद थी। ज़ाहिर है कुछ हक़ाइक़ थे और कुछ हक़ाइक़ जो रह गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो शेयर करने से पहले मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD, पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब मैं आना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं उस तफसील में आऊँ, मैं एक स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आपके TV चैनल्स पे भी चले। उसके बाद फिर मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान काजी है। मैं तुर्बत का रिहायशी हूँ, वहीं पे पला बड़ा था। तालीम मैंने मुल्क के अच्छे इदारों से हासिल की है। कायदा यूनिवर्सिटी से मास्टर एम.फिल की है और पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने PhD HSC स्कॉलरशिप के साथ की है, और करंटली मैं ब्यूटाउन में मुलाजमत कर रहा था। 18 ग्रेड का लेक्चरर था, और मेरी जो अहलिया हैं वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में, तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायदा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आलेवाल हुआ, वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए, और इसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया, और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलेवाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आलेवाल करवाया, खुद भी आलेवाल करता रहा। तो मैं जब क्वेटा आया तो क्वेटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में